Morning students, welcome in class 12th. So this is your first session of accountancy in your class 12th. And students, today we are going to start our volume 1, that is double entry bookkeeping, accounting for not-for-profit organization and partnership firms. And students, under this we're going to start with 1, which is financial statements for not-for-profit organization. So students, this is the first chapter of your class 12th. So let us start with our chapter number 1. Students, we are going to start with our NPO. Right students? NPO, as from the name itself, it is clear that not-for-profit organization, this is that organization whose purpose या फिर motive is not earning profit. Its motive is to serve the societies. But even if it is not a profit earning business, but it needs to keep the accounts, it needs to maintain the records of incomes and expenses, so as to know whether the organization is running in profits or suffering from losses. Okay, so when we make accounts, we record the financial transactions of NPO, it is slightly different as in the case of profit earning businesses. Because in case of profit earning business, we prepare trading account, profit and loss account, balance sheets to know about the financial position of the business and profit and loss of the business. But in this case, when we are talking about non-profit organization or not-for-profit organization, these are those organizations which calculates their profits and losses in terms of surplus and deficit. Because they are not earning profits, they are just watching that if they are having surplus, they could utilize it for next year. Right? And if they are having losses, it would be considered as a deficit in the business. So students, not-for-profit organization, if I'm talking about NPOs, so not-for-profit organization is known as NPO, non-profit organizations, are set with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to the public and public members, not with the purpose of earning profits. तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कोई कल्चरल या एजुकेशनल या हेल्थ या रिलीजियस या पब्लिक सर्विसेज टू द पब्लिक, नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट्स अर्निंग इज नॉट द पर्पस. So the examples of these organizations are school, colleges, public hospitals, literary society, societies for promotion of sports, arts and culture, social welfare organization या clubs. इस तरह की जितनी भी organizations होती हैं वो सब non-profit organizations होती हैं. Right? Funds received by non-profit organization, इनको जो funds receive होते हैं वो कैसे होते हैं? Either by way of donations, membership fee, इन लोगों ने कुछ मेंबरशिप फी रखी होती है, जो उनके मेंबर्स बनना चाहते हैं उनको एंट्रेंस के लिए, मेंबरशिप के लिए फीस देनी पड़ती है, वो उनके फंड का सोर्स होता है. वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी संस्था के लिए उस फंड से कुछ करते हैं. सब्सक्रिप्शन, कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वीकली, मंथली, ईयरली, जैसे भी सब्सक्रिप्शन उन्होंने डिसाइड किया है तो मेंबर्स को वो सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है. लोन्स, अगर वो लोन्स ले लेते हैं बैंक से या कहीं से भी, ग्रांट्स मिलती हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से या किसी और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो यही सब उनकी फंड का सोर्स होता है. यहां से उनको फंड्स मिलते हैं और वो अपनी संस्था के लिए उस फंड को यूटिलाइज करते हैं और उनका मोटिव होता है कि ये सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स. ओके. If we talk about the characteristics or features of NPO, it is almost the same as that of business, but slightly differences that in case of entity, just like as in a business case, I have told you that business and businessman is separate legal entity. So they also follow the same procedure for separate legal entity. Legal entity is separate. Purpose is for further educational, cultural, religious, professional. These are their objectives. Ownership, it is set up as a charitable society or trust and is not bound by any individual. कोई individual उनको own नहीं करता, कोई group of individuals होते हैं, but it belongs to society. Profit is not the objective. So main purpose of this thing is that their objective is not profit.
मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि बच्चों को आपको जॉइंट स्टॉक कंपनीज में बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं और वो ही कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं। तो इसी तरह से इस तरह की एनपीओज के लिए ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी डिसाइड की जाती है। ट्रस्टीज होते हैं जो बिजनेस की वर्किंग को आगे लेकर जाते हैं। फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर, उनके मेंबर्स देते हैं। डोनर्स यानी जो डोनेशंस देते हैं, कोई जो एंट्रेंस फी देते हैं, मेंबरशिप फी देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, इन सभी से हमें फंड्स रिसीव होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हमें ये 3 अकाउंट्स इसमें बनाने होते हैं। उनको बनाने का मेथड भी ऑलमोस्ट सेम है, आई एम नॉट सेइंग 100% सेम है, बट ये 70% इट इज सेम, बट सम थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि बिजनेस के लिए फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स इज समथिंग डिफरेंट, जबकि इस तरह की संस्था के जो फंड्स होते हैं, जो उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो नॉर्मल बिजनेस से थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो दिस वी विल कम टू नो व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। तो let us start with our first account, which is a receipt and payment account. So students, in receipt and payment account, the thumb rule is कि we record every type of receipt and every type of payment made in this account. Every type means whether it is a revenue nature, whether it is a capital nature, all things are recorded here in receipt and payment account. And students, one more thing, whether the receipt and payment is related to current year or previous year or next year, everything is recorded in this account, receipt and payment account. Okay, so I'm repeating my words again, that we record every type of transaction, whether it is revenue nature or capital nature, whether it is current year, previous year or next year, every type of receipts received are recorded here and the payments made are recorded here. Receipts on the debit side, payments on the credit side. Okay, all things are recorded here. So students, after receipt and payment account, we have to make income and expenditure account. Income and expenditure account is, I must say, almost as that of profit and loss account made in final accounts. So first of all, before moving on towards the income and expenditure account, I would like to explain receipts and payment account and how we make the receipt and payment account. So let us do one question of receipt and payment account. So students, here we have received the cash balance on 1st April. So how we will record this in receipt and payment account? So this is how we will make receipt and payment account. Receipts on the debit side, receipt account amount, payments amount, right? So we have received a cash of rupees 44,000. We will write here to balance brought down, just like we used to do it in the cash account now. So we will write here balance brought down. After they have said that subscription is received, so we will write here subscription receipts होती है ना, हमें जिसने सब्सक्राइब किया, हमें पेमेंट की, we will write here subscription of rupees 3,76,000. After that we have received a donation, we will write here 2 donations 80,000. After that we will write entrance fee, we have received the entrance fee. तो ये सारे हमारे सब receipts हैं जो हमें रिसीव हुए हैं, अमाउंट्स, राइट? फंड का सोर्स कह सकते हैं आप। रेंट रियलाइज्ड, तो हम यहां लिखेंगे रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल, ठीक है? कितना रिसीव हुआ हमें? 52,500। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बारी आती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे एक्सपेंडिचर है जिसकी हमने पेमेंट की है, तो वी विल राइट हियर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, and here it is 34,400. Then taxes, हमने taxes pay करेंगे ना, it will be in the payment side. Taxes will be of 5,000. It is given. After that we have paid the salary and wages. We will write here salaries and wages. It is of 2,15,000. After that we will write by honorarium. बच्चों, honorarium क्या होता है कि जैसे कोई गेस्ट लेक्चर्स आते हैं ना, तो हम उनको कोई अमाउंट नहीं देते, जस्ट एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट देते हैं कुछ भी।
जैसे कई बार हम उनको कैश प्राइज दे देते हैं या हम उनके लिए बुके ले आते हैं, कोई गिफ्ट ले आते हैं। जब से आपके स्कूल में भी कोई गेस्ट लेक्चर आता है, कोई गेस्ट आता है लेक्चर्स देने के लिए, हम उनको पेमेंट नहीं देते, हम उनको एज अ रिवॉर्ड कि वो हमारे लिए आए, उन्होंने टाइम निकाला, हम उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं, तो दैट इज ऑनोरेरियम। ठीक है, तो ऑनोरेरियम हमने पे किया 25,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हमें, तो वी विल राइट हियर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 29,500 हमारी इन रिसीप्ट्स में आ जाएगा। आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, वी विल राइट हियर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस दैट विच विल बी ऑफ 3,500। पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे, आपने +1 में एक कैश बुक की थी, पेटी कैश बुक, तो वो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं रोज के, तो वो पेटी कैश बुक में आते हैं। तो पेटी एक्सपेंसेस हमारे 9,000 के हुए। उसके बाद हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो वो भी हमारा फर्म के लिए है, तो हमने जितना भी पेमेंट हमारी गई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,100, वो हमने पेमेंट साइड पे लिख दिया। ओके तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्या किया, जितनी भी हमारी रिसीप्ट थी, जितना भी पैसा हमने रिसीव किया था, वो हमने रिसीप्ट साइड, डेबिट साइड में लिख दिया, राइट। और जितनी भी हमारी पेमेंट्स थी, जितना भी हमारे बिजनेस से पैसा गया आउटवर्ड्स, हमने उसको क्रेडिट साइड पे, सारी पेमेंट्स को पेमेंट साइड पे लिख दिया। आफ्टर दैट द रूल इज सेम, वी विल calculate the total and the more total will be written on the both sides, and more total will be of debit side, which is 6,25,000, and we will write it here on both the sides, 6,25,000, and after that we will calculate the balance, जो कि हमारा credit side में आएगा। तो balance को हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, जो कि हमारा कैश बैलेंस होगा एंडिंग का, तो इट विल बी 3,30,000। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी विल मेक द रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, राइट। इसमें हमारा रूल क्या था, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेदर revenue nature, whether capital nature, whether it is related to current year, previous year or next year, everything which we have received here, which we have paid here. So we have made this account. So students, I'm telling you that this account is not at all important in terms of exams. अगर ये आएगा भी तो maximum to maximum 3 marks में आ सकता है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना है, जिसमें कि 6 मार्क्स का आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 3 मार्क्स में आएगा आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग या फिर मटेरियल कंज्यूम्ड, वो मैं आपको करवाऊंगी अभी नेक्स्ट सेशन में, और 1 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो रिसीट एंड पेमेंट के चांसेस नहीं होते बच्चों, लेकिन इस साल क्योंकि सिलेबस में चेंज है तो हो सकता है कि ये 3 मार्क्स के लिए आपको आ जाए। सो प्लीज इसको प्रिपेयर कर लीजिए। 2 या 3 क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, तो वो प्लीज प्रैक्टिस सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल विद दिस टॉपिक, एंड आई विल स्टार्ट विद फंड बेस्ड अकाउंटिंग इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in terms of 3 marks. Okay student, that's all for today's lecture. Thank you. Have a nice day. Bye bye.